Hello everyone. Now in our design of structure, today we are going to see our next chapter WRC being very most important chapter. So before we going to see our previous video, we saw that singly RC beam. So in a singly RC beam, we saw that stress diagram for a singly RC beam, equation of neutral axis, moment of resistance, neutral axis, maximum depth of neutral axis, three types of beam section, maximum percentage of tension reinforcement, and some types of problem. So in a singly RC beam, equation of neutral axis is find out by using xu is equal to 0.87 FYAST upon 0.36 FCK into B. Then after moment of resistance mu. So there are mu with respect to steel and mu with respect to concrete. For a under reinforced section, mu is equal to 0.87 FYAST into D in bracket 1 minus Fy into AST divided by FCK B into D. It is mu with respect to steel. Then after mu with respect to concrete for a balanced section, so it is find out by mu is equal to 0.36 xu by d in bracket 1 minus 0.42 xu by d into FCK B into d square. Then after we saw neutral axis. So what is neutral axis? So the axis which separate compression zone and tension zone in the cross section of the beam is known as neutral axis. Then after we saw maximum depth of neutral axis. So xu max value for a different gate are given. So it is Fy in Newton per mm square and value of xu max. So for Fy 250, xu max is equal to 0.53 d. For Fy 415, xu max is equal to 0.48 d, and 500 is equal to Fy is equal to 500. So xu max is equal to 0.46 d. It is also given in IS 456 page number 70 and also SP16 page number 9. Then are three types of beam section. So there are three types: balanced section, under reinforced section, and over reinforced section. Then after we saw types of problem. So normally there may be two types of problems: analysis of section and design of section. So for analysis of section, in types of problem, cross section and reinforcement detail are given and moment of resistance is to be calculated. Now in design of section, in this type of problem, factor design load and mu are given, beam cross section and amount of resistance are to be calculated. And then we saw some different type of example, design and analysis. Now our next chapter is WRC beam, very most important chapter. So in this chapter some content are included: necessity of WRC beam, stress diagram for WRC beam, derivation of important formula and type of problem. Then after difference between singly and doubly beam. So necessity of WRC beam, why it is necessary? So for when the applied moment on the beam is more than the moment of resistance of the beam, the structure design has three ऑप्शन. ठीक है, तो सपोज हम किसी भी बीम पे मोमेंट अप्लाई करेंगे, वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी. एट दैट टाइम थ्री ऑप्शन आर कंसिडर. तो फर्स्ट इज़ टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम. एट दैट टाइम क्या होगा, बीम की जो डेप्थ है वो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा. टू यूज़ हायर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टू इम्प्रूव MR. ठीक है, ग्रेड ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, लाइक M25 M30 हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट ग्रेड. ठीक है, क्योंकि हमें क्या इम्प्रूव करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. देन टू प्रोवाइड रेनफोर्समेंट इन द कंप्रेशन जोन ऑफ बीम एंड इंक्रीज MR. ठीक है, सिंगली आरसी बीम में हमें क्या देखा था, ओनली इन बॉटम जोन. ठीक है, मतलब कि हमें ओनली टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड किया था. इन WRC बीम में क्या हम करेंगे, कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन बोथ जोन में हम स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ WRC बीम, when the
applied moment on the beam is more than MR of singly RC beam, the moment of resistance of beam is increased by providing reinforcement in compression zone. ठीक है, कि जो WRC बीम किसे कहेंगे कि व्हेन वी अप्लाई मोमेंट अप्लाई करेंगे, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा हम मोमेंट अप्लाई देन करेंगे इन सिंगली आरसी बम में, एट दैट टाइम क्या होगा, हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बीम में इंक्रीज करना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इन कंप्रेशन जोन. सो दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड WRC बीम. ठीक है, कि सपोज हमारे पास कोई बीम है लाइक दिस, एट दैट टाइम हम ओनली टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करेंगे इन सिंगली आरसी बीम. देन आफ्टर इन WRC बीम वी अप्लाई मोमेंट, एट दैट टाइम क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा हो जाएगा. एट दैट टाइम हमें उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्रेशन जोन में एक एक्स्ट्रा स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. सो दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड WRC बीम. So WRC beam is necessary in the following situation when it is not possible to increase the depth of beam due to architectural purpose. ठीक है, अब जो WRC beam है उससे सब नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है. तो कौन कौन सी क्राइटेरिया है, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज डेप्थ ऑफ द बीम ड्यू टू आर्किटेक्चरल पर्पस. आर्किटेक्चरल पर्पस की वजह से हम जो बीम में पॉसिबल डेप्थ ऑफ बीम नहीं बढ़ा सकते, एट दैट टाइम हम WRC बीम यूज़ कर सकते हैं. टू गेट मोर हेडवे इन द रूम. ठीक है, रूम के अंदर हमें मोर हेडवे प्रोवाइड करना पड़ेगा, एट द टाइम हम WRC बीम यूज़ करेंगे. व्हेन बीम इज सब्जेक्ट टू अ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इन केस ऑफ अर्थक्वेक एंड फॉर अ प्रीकास्ट बीम. ठीक है, सो दिस इज द सम नेसेसरी फॉर WRC बीम. नाउ स्ट्रेस डायग्राम फॉर WRC बीम आप देख सकते हो. स्टील आर प्रोवाइडेड टॉप एंड बॉटम, compression as well as in tension zone. ठीक है, सो हियर कंसिडर अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम. आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर दी गई है, इट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इन वेयर B इक्वल टू विथ ऑफ द बीम. ठीक है, B इक्वल टू विथ ऑफ द बीम, D इक्वल टू डेप्थ ऑफ द बीम, कैपिटल D इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, XU is equal to depth of the NA, XU is equal to depth of the NA यानी कि न्यूट्रल एक्सिस. देन D डैश इक्वल टू इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील. जो हम कंप्रेशन जोन में जो स्टील प्रोवाइड किया गया है तो हमें कवर देना पड़ेगा. सो D डैश इज इक्वल टू इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील. एंड AST1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर अ बैलेंस सिंगली RC बीम. AST1 एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट. Then AS2 is equal to area of additional tension reinforcement. So total area कैसे फाइंड करेंगे, कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन, AST1 प्लस AST2. ठीक है, टॉप एंड बॉटम दोनों में से. सो एरिया ऑफ टोटल टेंशन रेनफोर्समेंट फॉर अ डबली बीम. ASC इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, FSC इक्वल टू स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, FCC इक्वल टू कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील. Now for a singly balanced section, C1 equal to force of compression in a concrete. So C1 is find out by using 0.36 FCK B into XU. So it is a stress diagram for WRC beam. Now T1 is equal to force of tension in a steel. वो कैसे फाइंड करेंगे. So T1 is equal to 0.87 FY AS T1. Z1 is equal to lever arm. So it is D minus 0.42 XU. ठीक है, then for auxiliary section, so what is auxiliary section? So C2 equal to force of compression in compression reinforcement. C2 क्या है, जो compression zone है तो उसमें force होगा, तो it is the force of compression in compression reinforcement. So C2 is find out by FSC minus FCC into ASC. So what is FSC? So it is stress in compression reinforcement, FCC compression stress in concrete at the level of compression steel, and ASC equal to area of compression reinforcement. Same way T2 is equal to force of tension in additional tension reinforcement. T2 is equal to 0.87 FY AS T2. So Z2 equal to D minus D dash.
Now derivation of some important formula, how it is find. So first of all, moment of resistance of WRC beam is equal to moment of resistance of singly balanced beam section, balanced RC beam plus MR of auxiliary section, moment of resistance of auxiliary section. So MR of WRC beam is denoted by mu is equal to MR of singly balanced RC beam is equal to mu limit plus MR of auxiliary section is equal to mu2. So mu is equal to mu limit प्लस mu2. तो mu कैसे फाइंड करेंगे, mu2 को तो सिंप्लीफाइड करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे. सो mu2 इज इक्वल टू mu माइनस mu लिमिट. नाउ फॉर फिगर 4.2d, ठीक है, ये जो 4.2 फिगर है, ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ पे mu2 इक्वल टू T2 इंटू Z2, T2 इंटू Z2 यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है. mu कैसे फाइंड करेंगे, T2 auxiliary section into Z2, it is lever arm. So mu2 is equal to 0.87 Fy AST2 multiplied by d minus d dash. Similarly mu2 C2 into Z2, so it is mu2 is equal to FSC minus FCC area into ASC multiplied by d minus d dash. इफ़ द वैल्यू ऑफ SCC इज निगलेक्ट करेंगे तो रिमूव हो जाएगा. सो इट इज़ mu2 इज इक्वल टू FSC इंटू ASC d माइनस d डैश. ठीक है, जो वैल्यू है FCC इसे हम निगलेक्ट करेंगे. सो इक्वेशन बिकम mu2 इज इक्वल टू FSC इंटू ASC d माइनस d डैश. नाउ फॉर इक्वेशन 0.87 Fy AS2 d माइनस d डैश, ये हमारे पास इक्वेशन है mu2 का. ठीक है, इज इक्वल टू mu2 इज इक्वल टू FSC इंटू ASC d माइनस डी डैश. कंपेरिजन करेंगे सो क्या आएगा, d माइनस डी डैश कैंसल आउट हो जाएगा. सो एरिया ऑफ स्टील AST2 कैसे फाइंड करेंगे, सिंप्लीफाइड इट. सो AST2 इज इक्वल टू FSC माइनस ASC अपन 0.87 Fy. ठीक है, सिंप्लीफाइड करेंगे, AS22 को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो इट इज़ AST2 इज इक्वल टू FSC माइन इंटू ASC अपन 0.87 Fy. सो इट इज़ ऑल्सो गिवन इन IS 456 2000 पेज नंबर 96 क्लोज G 1.2. ठीक है, इट इज़ द सम डेरिवेशन ऑफ इम्पोर्टेंट फार्मूला. नाउ टू फाइंड आउट FSC एंड FCC, तो अप टू d बाई डी, d डैश बाई डी इज इक्वल टू 0.20, रेशियो बिटवीन d डैश टू d इज इक्वल टू 0.20 हो गया. एट द टाइम FCC इज इक्वल टू 0.446 FCK. एंड फॉर अ माइल्ड स्टील Fe250 FSC इक्वल टू 0.87 Fy. सो FSC इज इक्वल टू 0.87 मल्टीप्लाई बाई 250, सो इट इज़ 217.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. Now for Fe415 and Fe500 steel, FSC value is obtained from SP16 page 13 table F. So it is stress in compression reinforcement FSC Newton per mm square in a doubly reinforced beam. So Fy is in Newton per mm square. At that time d by d ratio. Then after कि हमें कैसे फाइंड करना है FSC, तो फॉर 415 d by d ratio 0.05 at that time FSC is equal to 355, 0.10 353, 0.15 342, 0.20 329. Same way for Fy 500, the value of FSC is for d dash by d ratio 0.5 is equal to 4 to 4, 0.10 412, 0.15 395 and 0.20 370. So it is some formula for WRC beam. Now difference between singly and WRC beam. So in the tension zone AST is provided. ठीक है, सिंगली RC beam में क्या होगा, टेंशन जोन में एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे. So in WRC beam in the tension zone AST is provided while compression zone ASC is provided. Area of compression steel of compression zone, area of tension zone. ठीक है,
सिंगली आरसी बीम में क्या आएगा, ओनली एरिया ऑफ स्टील is provided in tension zone. In WRC beam, area of steel provided tension zone as well as also in compression zone. In the compression zone, two number of 10 diameter anchor bar is provided. The anchor bar are not designed to carry any compressive force. ठीक है, कंप्रेशन जोन में हम दो स्टील प्रोवाइड किया जाएगा इन अ सिंगली आरसी बीम. इट इज़ कॉल्ड एंकर बार. So in anchor bar it is not designed to carry the compressive force. Compressive force carry नहीं करेगा. So in the WRC beam, in the compression zone, area of steel compression is provided which resist compressive force. ठीक है, compressive force को resist करेंगे जो हम WRC beam में steel provide करेंगे in compression zone में. So in a singly RC beam, mu less than mu limit beam is designed as a singly RC beam, and when mu greater than mu limit beam is designed as WRC beam. In a singly RC beam, moment of resistance is less. In a WRC beam, MR is more because we provide also steel in compression zone. Compression zone में भी हम steel provide करेंगे. At that in a WRC beam, MR is more. Singly RC beam, ductility is less, vice versa. In a WRC beam, ductility is more due to the ASC in compression zone. Obviously steel provide करेंगे compression zone में, so ductility बढ़ जाएगी. In a singly RC beam, no suitable where there is a chance of reversal of stresses. So in a WRC beam, suitable where there is a chance of reversal of stress during a earthquake. ठीक है, so it is the difference between singly and WRC beam. Very most important chapter, it is your WRC beam.